This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language instructor. And in today's class, we are focusing on past simple. And if I am not wrong, so this is actually your seventh lecture. इससे पहले मेरे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, बाकायदा तौर पे गूगल क्लासरूम में अपलोड हुए हुए हैं। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप रिवीजन सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी चल रहा है, जो प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट हुआ है। और उसमें कल हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स करवाया था, तो रात में मिस बुशरा रिवीजन सेशन दे रही है। अगर आप अपना रिवाइज करना चाहते हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं रात 8 से 9 के सेशन में। ठीक है। हम अब आगे जा रहे हैं पास्ट सिंपल। आपने अपनी स्पोकन क्लास के अंदर पास्ट स्टोरीज बनाना शुरू कर दी है। माजी में आपने कुछ किया था। माजी में आपने कुछ किया था। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। शी डांस्ड एट द पार्टी। उसने माजी में कुछ किया। दे बॉट अ न्यू कार। ही स्टडीड इंग्लिश फॉर 2 years। आपने माजी में कुछ किया। वी प्लेड सॉकर इन द पार्क। द सन रोज अर्ली दिस मॉर्निंग। आज सुबह सूरज जल्दी निकल आया, टाइम पे निकला था, जबकि द कैट चेज द माउस। माजी में कुछ किया, आपको सेकंड फॉर्म लगानी होती है। जब आप नेगेटिव की तरफ जाते हैं, अगर आप गौर से देखें तो नेगेटिव के अंदर आप डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आई डिडंट वॉच टीवी yesterday. She didn't go to the concert, did not eat, didn't study, didn't see, didn't bark, didn't clean, didn't pass, didn't arrive, didn't call. आई बात समझ? आसान सी बात है। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे? डिड को आप पहले ले आएंगे और उसके बाद आप डिड द टीम विन द चैंपियनशिप। जब भी डिड आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप याद रखें, याद रखें, याद रखें कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ। WH वर्ड्स के साथ बनाना है। व्हेन डिड यू गो, वेयर डिड यू गो फॉर योर वेकेशन, when did she arrive at the airport, why did they cancel the meeting। फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर है। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तमाम स्टूडेंट्स को फॉर्मेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पास्ट सिंपल? नो सर। नो सर। ये एक अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि सर हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते क्यों हैं? Why do we use past simple? We use past simple to say that something happened in the past. माजी में कुछ हुआ। हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जब हम ये कहते हैं कि माजी में कुछ हुआ। माजी में अल्लाह माफ करे बहुत कुछ हुआ है, और ये जो हफ्ता अभी गुजर रहा है और ये जो हफ्ता गुजरेगा, आने वाला हफ्ता, इन सब में आप यही बात करेंगे कि आपके साथ माजी में क्या हुआ। आप ये बताएंगे कि आपके साथ माजी में क्या हुआ, पिछली गर्मियों में आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। लास्ट समर आई ट्रेवल्ड टू जापान विद माय फैमिली। माजी में कुछ हुआ। वी विजिटेड टोक्यो, क्योटो एंड ओसाका। In Tokyo, we explored the bustling street and visited famous landmarks like Tokyo Tower and Shibuya Crossing. In Kyoto, we admired the buildings, temples, and participated in a traditional tea ceremony. In Osaka, we tried delicious street food and went on thrilling rides at Universal Studios. Each day was filled with exciting adventures and new experiences. We took lots of photos to capture the memories. The trip was an incredible journey that we will never forget. माजी में कुछ हुआ। अगर माजी में कुछ हुआ तो देखिए आपके लिए अब आपको लिखना भी है, और लिखना भी और बोलना भी है कि आपके साथ माजी में क्या हुआ। इसी के साथ आप पास्ट एक्शन, पास्ट स्टेट को भी ऐड कर सकते हैं। कहता है वी कैन आल्सो यूज पास्ट सिंपल टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट, पास्ट स्टेट्स व्हिच आर नाउ फिनिश्ड। माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी लेकिन अब नहीं है। माजी की कोई ऐसी हालत जो पहले थी अब नहीं है। मैंने एक किताबी डेफिनेशन भी लिखी है। पास्ट सिंपल एक्शन रेफर टू स्पेसिफिक एक्शंस और इवेंट्स दैट ऑकर्ड इन द पास्ट। एक ही बात है।
जो मैंने ऊपर लिखा है आसान अल्फाजों में, we use the past simple to say that something happened in the past. These actions have a clear starting point and end point. They are usually dynamic and often involve physical or observable activities. मतलब एक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें वाकई आप कोई ना कोई अमल करते हैं, कोई चीज आप करते हैं. जैसे मैंने क्लास ली तो there is a physical action. I took class. I attended a ceremony. I attended seminar. तो आपने कोई एक्टिविटी अटेंड की है, कुछ कोई एक्टिविटी की है. that is why it is action. और जब हम बात करते हैं पास्ट स्टेट की तो कहता है पास्ट स्टेट सिंपल स्टेट्स ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब बाय स्टेट और कंडीशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट. जो माजी में कोई ऐसी हालत जो आपकी थी. These actions states are often non-physical. समझ रहे, non-physical and can include emotions, thoughts, possessions or states of being. जैसे आप लोगों ने याद करें, मैंने आप लोगों को was, were और had पढ़ाया. was, were और had याद आ रहा है आपको? Yes, sir. बस ये was, were और जो had था वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करें. ये past state verbs है. आप लोगों को याद हो रहा होगा फिजिकल कंडीशन. याद आ रहा है? फिजिकल कंडीशन में लिख भी देता हूँ, आप लोग रिव्यू हो जाएगा. फिजिकल कंडीशन. But just like I was ill. सही है. एज, एज, लोकेशन याद आ गया. प्रोफेशन, हाइट याद आया जो मैंने पढ़ाया था. हेड, पोजेशन, इलनेस और रिलेशनशिप. और कैरेक्टरिस्टिक्स. इवेंट, नेचर. सारे मैंने आपके सामने दोबारा लिख दिए, आप याद रहेगा. फिजिकल कंडीशन, आई वॉज नर्वस. I was nervous. I was nervous. Age, I was 17 years old when I started teaching. I was 17 years old when I started teaching. I was 17 years old. I was 17 years old. Age, I was in Lahore. Location, I was a teacher. Profession, I was 5'9". Now I am 5'11". Possession, I had a car. Illness, I had fever. Relationships, I had so many friends. Characteristics, I had healthy hair. Event, I had a birthday. Nature, I had friendly nature. Still I have. When I was a child, आप बताओ ये स्टेट है या एक्शन है? State. State. I lived in a small village surrounded by beautiful countryside. Action है, state है. State. Lived, Action. रहना. I lived. Action. Action. State. Action. Action. तब action है ना. I lived आ रहा है ना. I lived. रहना. Small village. I lived. I lived. I remember spending hours playing by the river. I remember Spending hours. I remember Selection. spending hours playing by the river. Yeah, action. Listening to the birds Action. singing in the trees and feeling the warm sunshine in my face. Life was simple. State. And I was content. Content का मतलब होता है मैं मुतमईन State. था. I was satisfied with my life. State. My family State owned verb. My family owned a charming little house with a big garden.
Action. कौन सा Possessed. ओन का मतलब रखना, मैं ये भी कह सकता हूँ माई फैमिली हैड अ चार्मिंग लिटिल हाउस, ये भी स्टेट वर्ब नहीं है, Possession. पोजेशन है ना, रखना। पोजीशन आ रही है। वेयर जी वी सर। ग्रीव, वेयर वी ग्रीव वेजिटेबल्स, ग्रीव Action. एक्शन वर्ड। flowers, and we had a loyal dog named Max. State. Possession. Sir, possession. Possession. Who was my State best possession. friend? Who was my best friend? State relationship. State. Stayed there. I loved spending time with him. Action. Emotion, emotions, emotions. Emotions. I love spending time with him, running through the fields and exploring nature. Those were happiest days of my life. Those. State. Sir, State. age is what? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ, शायद आप लोग इस बातों को सुनकर थोड़ा सा परेशान भी हो, लेकिन वक्त के साथ साथ आप खुद चीजों को समझ जाएंगे क्या कह रहा है। इन दिस पैराग्राफ, द पास्ट सिंपल वर्ब्स lived, remember, spent, listened, felt and explored represent past states or condition. अब अगर इसने, अब ये कुछ बातें गलत भी लिखता है क्योंकि ये चैट जीपीटी है तो गलतियां कर सकता है, ये ग्रामर बुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें कौन सा स्पेंट इसने उठाया है। यहाँ लिखा है आई रिमेम्बर, रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। देखिए याद रखना जो है ना, ये आपका कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये आपकी एक मेंटल स्टेट है। आज एक नई बात सुनी, मेंटल स्टेट। फिर ये जो लिव्ड है, इस लिव्ड में भी आपका कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये आपकी मौजूदा हालत है, परमानेंट स्टेट है ये आपकी, इसमें आप कोई एक्शन नहीं करते, ठीक है। अब उसके बाद वो कहते हैं स्पेंड, लिसन, लेकिन ये कौन सा स्पेंड उठाया है इसने, ये वाला, आई रिमेम्बर स्पेंडिंग और लिसनिंग, ये वाला इसने उठाया है गालिबन। इसके अलावा तो मुझे कोई और नजर आ रहा है आपको, लिसन, कोई और लिसन कहीं पर नजर आ रहा है, यही वाला इसने उठाया होगा। तो रिमेम्बर के बाद स्पेंडिंग और लिसनिंग को इसने एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल किया। ओन हो गया, ग्रीव हो गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ये लिखता है वेयर वी ग्रीव फ्लावर्स, दिस इज एब्सोल्युटली एक्शन। हमने फ्लावर्स, दिस इज एक्शन। वी ग्रीव flowers, loved, ये spent, ran, this is action, explored, this is action, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से गायब कर देते हैं ताकि बाद में पढ़ने वालों को परेशानी ना हो। जो इसमें स्टेट वर्ब है ना, सिर्फ वो मैं लिखे रहते थे। ग्रीव को भी हटा दीजिए, ग्रीव इज नॉट अ स्टेट वर्ब। फेल्ट, लिसन, लिस्टेड और स्पेंड को भी हटा देते, सुन पढ़ना पढ़ने वाले परेशान रहेंगे। हाँ, लिव्ड, remembered, felt, owned, had, loved represent states. These verbs describe a state of living in a village, the experience of enjoying nature, the position of a house and a dog, emotional state of being happy. These states existed over a long period of time. ठीक है, माजी की कोई ऐसी हालत जो आपकी थी लेकिन अब नहीं है, जैसे कि आप अंग्रेजी में पहले बहुत कमजोर थे। आई वॉज वीक इन इंग्लिश, आई वॉज वीक इन इंग्लिश। अब ऐसा नहीं है, अब आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम वीक इन इंग्लिश, आप ये कह सकते हैं आई वॉज वीक इन इंग्लिश, कह सकते हैं ना, या नहीं कह सकते। नाउ आई एम मच बेटर, आई एम क्वाइट बेटर एट इंग्लिश, कह सकते हैं सर। Structure had to plus base form of verb. The phrase had to is used to express the necessity or obligation in the past. It indicates that someone was required to do something or had no choice but to take a particular action. Had to is followed by base form of the main verb to form a complete sentence. यानी कि माजी की कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको निभानी थी, जैसे आई हैड टू वेक अप अर्ली दिस मॉर्निंग टू 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 गो टू एयरपोर्ट।
I had to wake up early last morning to receive my sister from the airport. They had to study hard for the exams. कोई ऐसी जिम्मेदारी है जो आपको निभानी थी पिछले कुछ दिनों में? याद करें. Sir, I had to. Sir, I had to get early in the morning, but now children's schools are off, so I don't. Okay. Yeah. I had to. Anyone else, sir? I had to. Get early in the morning. I had to. I had to wake up early in the morning because I had to make breakfast for my kids. Okay. और कोई आपको I बात? had to stay late at work because there was a lot of overtime. That's very good. Yes, sir. I had to go to my friend's home because they came back from Hajj. I had to. Had to. Clear हो I गया? had to do my home chore a few days ago, but now I have a full-time maid. I had to go to a doctor because I was ill. Very good. I had to. I had to visit mother's home on Eid day. I had to. I had to cancel my plan because I was sick. I had to cancel my plan because I was sick. Next, I had to. I had to travel in a public bus. I had to travel in the public bus. और किसको? I had to off I had to off day. I have to off from office because of heavy rain. I had to take a day off because of heavy rain. I had to take. I had to take off. I had to take off. I had to take my online classes. I had to take my online classes. Anyone else? I had to visit Centaurus Mall. I had Centaurus. I had to go to a store. Oh, sorry, sir. You live in Islamabad? Centaurus Mall. Yes, sir. Okay. Because my sister lives. My in-laws' home on. Yes, go ahead. I had to. I had to Yes, visit I had- my in-laws' home because on Eid days. I had to go to the store because I ran out of grocery. Okay. That's very good. Anyone else who wants to add something? Sure. Yes, sir. I had to invite some guests at my home on Eid day. सही. अब आ जाइए used to. Had to के साथ used to. कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे. The phrase used to is used to describe past habits, routines, or states that were true or occurred regularly in the past but are no longer the case in the present. माजी में कोई ऐसे काम, माजी की कोई ऐसी आदतें
जो आपके अंदर थी, माजी हुए ऐसे काम जो आप किया करते थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप बड़ी हो गई हो। जैसे आप पहले फीडर किया करती थी, लेकिन माशाल्लाह अब आप बड़ी हो गई हो। है Sir, भाई? I used to shop online things. I used to Now I buy, am I able used to to. buy, I used to buy things online. Okay, I used to buy all, yeah, things online, but now I am able to go uh, shopping mall or. Because you guys are habitual of this thing. You Sir, because want, because my kids were too younger, so I was not able to go my wife had a birthday. outside. I bought Yeah, everything online. I bought, ordered sir, because everything online. Even I have a bike. sir, when I when can I go was outside. in Saudi, No matter where you are living, in Saudi sir, or when I was Pakistan, in you Saudi can. Arabia, I used to live. No, sir, in COVID situation, I used to buy online. So it's a very you know time consuming thing that you have to go outside and you buy something. Sometimes buying online is also time consuming. You have to find the right product. Like I ordered flowers, a very good bouquet. Like But sir, it really normally you costs are around. sitting with uh, your kids. it normally costs 3,000, but I Yeah. bought just in rupees 1,500 in Karachi, and I ordered a cake online from United Kingdom, and I also ordered. What else did I order? I have recently ordered. Even I ordered a gold chain online, a gold chain, because one of my distant family friend is a goldsmith. So I just simply asked, okay, please, one gold chain. This birthday is gonna be very expensive. Because I have given in 10 years, I have given Yes, all sir. kinds of cell phones. So she needs no cell phone. She openly rejected cell phone, iPhone offer. No, I don't need, because kids are there, they normally throw cell phones. An iPhone, you have to take a lot of care. An iPhone 12, 11 Pro Max, it cost around 2 point something. So she said, no, no, your mother will tell me so many things. Don't need to buy. Okay. So, Excuse me, sir, I have a question. yes. Sir, had to और used to में क्या difference हुआ? Like Had to had में to भी जिम्मेदारी ऐसी थी, जिम्मेदारी. had to जिम्मेदारी थी, इसका used to आपकी आदत थी, आपका रूटीन का कोई काम था, आपकी कोई हालत थी जो आपके अंदर हुआ Okay. करती थी। पहले आप कितनी खूबसूरत हुआ करती थी, देखिए आप, अब तो मेकअप का कमाल है। सही कह रहा हूँ गलत? आई यूज्ड टू, मैं पहले दिन Sir, कितना दुबला हुआ करता। अभी भी खूबसूरत है. माशाल्लाह, वो मेरा एक सेंटेंस याद रखा करें, विशफुल थिंकिंग इज एन इनक्योरेबल डिजीज। खुशफहमी लाइलाज मर्ज है। अल्लाह पाक सबको ये मर्ज दे, क्योंकि ये जीने का एक सहारा है। सर 50% हम खूबसूरत Yes, है, sir. 50% सर मेकअप का कमाल। एग्जैक्टली। हम चलें, आई यूज टू। अच्छा, अब देखिए इसमें हैबिट्स की बात करेंगे ना, जैसे लिखा है आई यूज टू गो जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। मैं हर सुबह जॉगिंग पर जाया करता था। आगे देखो ब्रैकेट में लिखा है, बहुत आसान समझाने के लिए। इन द पास्ट it was a habit for me to go jogging every morning, but I don't do it anymore. They used to live in a small town. In the past, their place of residence was a small town, but now they live somewhere else.
She used to play the piano. We used to visit our grandparents every summer. He used to work as a chef. मैंने इसको और आसान अल्फाजों में भी लिखा है, देखिए शायद आपको बहुत खुशी होगी ये जुमले पढ़कर। एक्शन को अलग कर दिया और स्टेट को अलग कर दिया। I used to go jogging every morning. I used to go jogging every morning. They used to play in band together. She used to travel. We used to eat. He used to swim. Action है. लेकिन अब देखिए, I used to be afraid of heights when I was younger. I used to be slim and smart. I used to be. 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 बताइए कोई आपकी ऐसी हालत जो हुआ करती थी। I used to be naughty. I used to be. I used to be fat. I used to be fat. I used to be slim. I used to be. I used to be, no. I used to be. I used to be shy. I used to be shy. I used to be afraid of heights. I used to be afraid of heights. I used to be afraid of darkness, from darkness. I used to be afraid of darkness. Or Of dark. I used to be climb trees. I used to be. I used to be. I used to be really good at cooking. I used to be. I used to be. I used to be good at cooking. अब क्या हो गया? जायका उड़ गया हाथ से। जुमला है I used to be. I used to be play cricket when I was in school. I used देखिए अब आपने I play लगा दिया। आपने लगा दिया play, ऐसा नहीं होगा। I used to be. Okay, so I used to be insecure. what should be? I used सर to. फिर क्या होगा अगर प्ले नहीं होगा तो? I तो आप used to. प्ले ना लगाए ना, मतलब आप एक्शन Okay. की बात कर ले। यस, मैं तो अभी स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। Okay, okay, okay. I used to be. I used to be live in a town. I used देखिए I used to be live in a देखिए फिर आप Yes, लिप sir. लगा रही हो। बी के बाद एडजेक्टिव लगाए ना, बी के बाद एडजेक्टिव याद नहीं करवाया आपको। सॉफ्ट है एक I गरीब used to एडजेक्टिव। be. Yes, sir. फारिग कर देते बस कोमल को, फिर कोई फायदा नहीं होगा उनका एडजेक्टिव याद करवाने का। Describe yourself. I used to be honest. I used to be optimistic. I used to be. वो पढ़ाई थी उन्होंने एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटीज कराई हैं। I used to be Yeah, I लाहौर। used to be optimistic. Yes, sir. बस पढ़ लिख के डिबो दिया आप लोगों ने, रिवाइज नहीं करते आप लोग। I used to be. आप used to have. I used to be I loving. used to be loyal with others. I used to have. आप used to have पर आ जाए। I used to have. I used to. Sir, I used to instead of be मैंने be I और used to have. be confident. I used to be yes, sir. confident. I have used to be a confident. car. Be और have आप लोगों ने I used to have a car. जी, Be और sir. have बुनियादी बातें याद करें, मैंने फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाई है सब बातें। I जी, used to sir, have, समझ आ गया। I used to have long hair. बस यार। I used to have healthy hair.
I used to have healthy hair. I used to have I used to have a beautiful house. I used to have a beautiful house. I used to have my own house. Now I don't. Now I live in a rented house. I used to have my own car. माशाल्लाह सुभान ठीक है बेटा क्लियर हो गई अब बातें परेशान तो नहीं हो रहे No, sir. चलो No, अब sir. माजी के ऐसे अल्फाज पास्ट टाइम वर्ड्स जो शायद आपने आज से पहले सुने भी ना हो ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं पास्ट टाइम वर्ड्स लास्ट ईयर यस्टरडे last night, last week, last month, last year, a while ago, earlier, previously, in the past, once, long ago, back then, in the old days, ages ago, sadiyon pehle, in the distant past, in the bygone era, in ancient times, once upon a time, in my childhood, during my teenage years. सुने तो होंगे लेकिन इस्तेमाल इनमें से कुछ भी नहीं होंगे सारे मैंने आपको बकायदा तौर पर एग्जाम्पल के साथ लिख कर भी देते हैं आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल अगर तो करेंगे तो याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा आप सिर्फ और सिर्फ किसमें करेंगे पास्ट में करेंगे आ गई बात समझ ठीक है पास्ट सिंपल में ही इन अल्फा यस्टरडे हमेशा पास्ट सिंपल में ही आएगा कभी प्रेजेंट टेंसेस में नजर नहीं आएगा लास्ट नाइट का इस्तेमाल कभी प्रेजेंट टेंसेस में कर सकते हैं ये पास्ट टाइम वर्ड्स हमेशा पास्ट टेंसेस में नजर आएंगे लास्ट वीक वी वेंट ऑन अ रोड ट्रिप टू द बीच I traveled to Paris last month and explored the city. Last year, I graduated from the university. A while ago, I used to play soccer every weekend. I woke up earlier than usual today. Previously, I worked as a teacher before changing careers. In the past, people relied on handwritten letters to communicate. Once I visited the Grand Canyon and it was breathtaking. Long ago, dinosaurs roamed the earth. Back then, we didn't have a smartphone. कुछ कई अरसे पहले कहते ना पहले हमारे पास सेल फोन नहीं थे तो पहले क्या बोलेंगे बैक देन इन द ओल्ड डेज पुराने वक्तों में पीपल वुड गैदर अराउंड द रेडियो फॉर एंटरटेनमेंट पुराने वक्तों में लोग एक जगह जमा हुआ करते थे आप देख रहे कि मुख्तलिफ अल्फाजों के लिए मुख्तलिफ वर्ड्स है हमारे पास सदियों पहले ages ago human discovered fire इंसान ने आग को दरियाफ्त किया in the distant past civilization built magnificent pyramids कुछ सदियों पहले कुछ सालों पहले in the bygone era knights and castles were prominent वो दौर जो गुजर चुका है in ancient times पुराने वक्तों में once upon a time एक दफा का जिक्र है एक बहुत खूबसूरत सी शहजादी थी फिर उसकी शादी हो गई तो खत्म हो गई कहानी In my childhood, I used to love playing with toys. During my teenage years, I enjoyed playing in a band with my friends. Past time words चल रहे हैं अभी ऐसा भी हो सकता है कि आप past time words का इस्तेमाल जो है वो कुछ prepositions के साथ कर लें और वो preposition मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखे हैं in, on और at. अब यहाँ पर जब आप इनको past simple में इस्तेमाल करेंगे तो ये भी आपके लिए पास्ट टाइम वर्ड्स बन जाएंगे आप कोई सा भी पार्ट ऑफ द डे लगा दीजिए इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून कोई सा भी साल लगा लीजिए इन 2 वीक्स ये भी पास्ट टाइम वर्ड हो गया इन अंडर 4 आवर्स ये भी पास्ट टाइम वर्ड हो गया और उसके बाद ऑन मंडे यहाँ पर आपने कोई सा डे लगाएंगे तो ऑन आएगा कोई सी डेट लगाएंगे तो ऑन आएगा कोई सा इवेंट होगा तो ऑन आएगा ऑन न्यू ईयर्स ईव ऑन बर्थडे ऑन फादर्स डे ऑन अ सनी डे ऑन हर बर्थडे ये इवेंट्स है तो ये इससे पहले आप ऑन लगाते हैं ये भी पास्ट टाइम वर्ड्स हो गए एट मिडनाइट एट नून एट 3 PM कोई सा क्लॉक टाइम आ जाए
मील टाइम आ जाए आप उससे पहले हमेशा एट लगाते हैं, तो ये भी पास्ट टाइम वर्ड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं टेंस बदल दूं, जैसे आई विल कॉल यू एट मिडनाइट, तो अब एट मिडनाइट जो है वो एक न्यूट्रल, ये फ्यूचर टाइम वर्ड की हैसियत से भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? फ्यूचर टाइम वर्ड की हैसियत से भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आई अराइव्ड एट मिडनाइट, दे मेट एट नून, we had a meeting at 3 p.m. He visited the museum at lunchtime. She arrived at the airport at 8:30 a.m. आ गई बात समझ? ठीक है, ये Yes, पास sir. टाइम Yes, sir. वादे के जी मुताबिक, सर। वादे के मुताबिक छोटी छोटी स्टोरीज लिख चुका हूँ आप लोगों के लिए। स्कूल लाइफ, ड्यूरिंग माई स्कूल लाइफ I had many experiences. बताओ स्टेट है या एक्शन? I had many incredible State. experiences. Stayed there. State. I attended State. classes, State. studied diligently, and completed assignments on time. My classmates and I formed strong bonds and shared countless laughter-filled moments. We participated in various extracurricular activities such as sports competition, music concerts, and drama performances. I vividly remember, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कहते हैं ना मुझे बहुत अच्छे से याद है। I vividly remember the excitement and nerves before exam, the joy of receiving good grades, and the satisfaction of accomplishing academic goals. We had field trips to museum, historical sites, and educational tours that expanded our knowledge. School life was a time of growth, learning, and creating memories that will always hold a special place in my heart. कितना खूबसूरत लिखा है ना मैंने? सुबह वादा किया था, Yes, दोपहर Yes, sir. दोपहर में पूरा भी कर दिया। सर ये नोट्स आपने शेयर कर दिए? अभी नहीं, जी सर। आप क्लास के बाद करेंगे आपसे शेयर। Okay, Last thank summer, you, my sir. family and I had a wonderful picnic at the seaside. सही है? We packed a delicious lunch and drove to a picturesque coastal spot. When we arrived, we spread out our picnic blanket, होती है ना चटाई वगैरह, our picnic blanket, and enjoyed the warm sand beneath our feet. The sun shone brightly and the waves crashed against the shore. We played beach games, swam in the refreshing water, and built sand castles. We laughed, shared stories, and savored the tasty food we had brought. As the day came to close, we packed up our belongings and headed home, grateful for the precious time spent together by the seaside. आप बहुत सारे और भी पैराग्राफ्स आपके लिए मैंने लिखे, इसको लाजमी पढ़िएगा और खुद से हर टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा। अगर मुझे आपका पैराग्राफ अच्छा लगा, उसमें कोई गलती नजर ना आई, तो अगली दफा आपका वो पैराग्राफ आपके नाम के साथ नोट्स में ऐड कर दूं। सही है? रिटन बाय शाइस्ता खान, स्टूडेंट ऑफ SKH. Last week, I witnessed a road accident while driving home. It was a frightening experience. I was driving along the highway when suddenly a car came from the opposite lane, lost control, and veered into an oncoming traffic. The cars collided with a loud crash, causing chaos and panic. People rushed out of their vehicles to help the injured passengers. I called emergency services 911 and it stayed at the scene until help arrived. It was a distressing sight as paramedics tended to the injured and the wreckage was cleared. The accident served as a stark reminder of the importance of cautious driving and following traffic rules. It was a sobering moment that reminded me to be vigilant on the road and always prioritize safety. कितनी खूबसूरत vocabulary आपको मिल रही। रिटन vocabulary अलग होती है, बैंक रॉबरी आ गया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे, विजिट टू म्यूजियम, मोबाइल स्नैचिंग, बर्थडे सेलिब्रेशन। ये नोट्स आपके पास आ जाएंगे आज थोड़ी देर में, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा। आपका पास सिंपल, अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं
तो आज रात का सेशन ज्वाइन कीजिएगा 8 से 9। हम इन बातों को दोबारा रिपीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर pronunciation session with Miss Maria. Assalamu alaikum.